A top focus is the political potboiler in Himachal, and in signs of a thaw in the infighting-riddled Himachal Pradesh unit of the Congress, State Minister Vikramaditya Singh has taken his resignation back just hours after tendering it. This comes as Congress observers D.K. Shivakumar and Bhupinder Hooda held meetings with Congress leaders in Shimla. Remember, Vikramaditya had accused Sukhvinder Sukhu of negligence towards MLAs and disrespecting his late father and former Chief Minister Vikramaditya Singh. This amid massive political turmoil in the state where Congress lost the Rajya Sabha elections after 6 party MLAs cross-voted. There is a difference between taking back the resignation and there is a difference between not pressing for your resignation till the time the dialogue and the action of the observers is not complete. तो मैंने ये कहा है क्योंकि हमने वार्तालाप ऑब्जर्वर्स के साथ करी है और ऑब्जर्वर्स के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है। इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाएगा। The Deputy Chief Minister of Himachal Pradesh, Mukesh Agnihotri, is meeting observer. Mind you, he is the strongest contenders for the Chief Ministership post. If the Congress High Commands decide to, do away with Mr. Sukhu, then there is a viewpoint, then the strongest contender is going to be Mukesh Agnihotri. But as far as Vikramaditya is concerned, he says that he is not going to press for his resignations. In fact, we have also learned from our sources in the Chief Minister's office that in fact the Chief Minister also spoke to him and said that whatever has been, said between us should be over. You are just like my friend. So that messaging is also going on from both the sides. They are trying to adjust to each other. The new body language we can see. The Chief Minister himself was here when he came out of the meeting. After meeting the observers, he himself said that the government will continue for the remaining portion of time. So obviously he is also changing his tactics, his body language, because the main argument against him was that he was not meeting people and the promises that the Congress had made when they came to power are not being fulfilled, and that's the reason why that the MLAs, whenever they go to their respective constituencies, people ask them questions to which they don't have any answers. Another one of our top stories in Jharkhand, there's a mishap in Jamtara, a train mishap which claimed 2 lives. Now, as per initial information coming in, there was a rumor of a fire due to which passengers climbed off the train. But Railway says that the victims are not passengers and the deceased were actually walking on the track when the mishap happened. Railways also clarified that there was no incident of fire being reported on the train. Meanwhile, a report suggests that at least 10 to 12 people have been rushed to the hospital. A 3-member team has been sent to the site to investigate. दिखाई पड़ रहा है 2 से 3 तक अभी बॉडी देख पाए हैं और बॉडी अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, लाइट कम रहने के चलते। घायल कितने ये तो और नहीं बता सकते। ट्रेन का टाइम बता सकते? ट्रेन का टाइम 6:40-50 के बीच में ही घटना हुआ है। नहीं, हम बाइक से अपना जामतरा से आ रहे थे, ट्रेन जैसे रुकी देखे थोड़ा सा हो हल्ला हो रहा था तो हम ब्रेक करके हमने पब्लिक को हेल्प करने के लिए दौड़ा। लगभग कितना आदमी ट्रेन से उतरा होगा? ट्रेन यहाँ वो उतरा होगा कम से कम 200-300 आदमी लड़का उतरा हुआ था, बैग लेके, कोई ट्रॉली लेके, कोई बच्चा लेके, कोई बीबी लेके, सब मजदूर आदमी थे जो बिहार जा रहे थे। अभी तक 2 बॉडी रिकवर हुई है और साथ में हम लोग हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी रिक्वेस्ट किए हुए हैं रेलवे से, और जल्दी जारी होते ही हम लोग भी प्रशासनिक जिला प्रशासन स्तर पे भी इसको हम लोग टेलीकास्ट कर देंगे, सो दैट कि जिनके भी परिजन हैं उसके बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं ले पाएंगे। घायल कितने लोग हैं सर? घायल की सूचना नहीं, इसी के लिए हम लोग जो हॉस्पिटल लेवल पे सुपरवाइजर या मेडिकल ऑफिसर को रखे हुए हैं कि जो भी अगर पहुंच रहे इलाज के लिए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में या चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसके बारे में जानकारी को एकत्रित करें। घटना क्या सर? कारण अब रेलवे से पूछ के ही या जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ट्रेन जो है आसनसोल रेल डिवीजन अंतर्गत जो जामतारा जिले के ये काला झरिया होल्ट के पास ये जो हादसा है, ये हादसा हुआ है। ये ट्रेन जब वहां पे रुकी है काला झरिया स्टेशन के पास,
उसी समय एक अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लग गया है बॉगी में, और आनंद फानन में जो यात्री थे वो नीचे उतरने लगे और ट्रैक से पार कर रहे थे। उसी बीच में एक लोकल ट्रेन आई है और उसके चपेट में कुछ यात्री आए हैं, जिसमें 2 यात्री की मौत हुई है और कई घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। और एक टीम गठित कर दी गई है और वो टीम जल्द ही जो घटनास्थल है वहां रवाना होगी और फिर पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन जो यात्री की मौत हुई है वो यात्री ट्रेन से कूदे थे और उसी दौरान इनकी मौत हुई है। News now from the Supreme Court, and the top court has approved Rajasthan's rule for government jobs, which says that there should be no government jobs offered for those with over 2 children. In fact, the Supreme Court went on to say in its order today that declining government benefits past 2 children is not illegal, not discriminatory. The Supreme Court went on to add that the objective of the policy seems to be to promote family planning and that the rule comes within the scope of policy. My colleague Ashish Bhargav has more. देखिए तोरिमा, इट्स अ बिग ऑर्डर एज पर एज राजस्थान गवर्नमेंट इज कंसर्न, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया है। 20 फरवरी का हालांकि ये आदेश है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने चैलेंज किया था जो एयरफोर्स में पहले थे और उसके बाद वो रिटायर होने के बाद उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के लिए, लेकिन उनको इसलिए डिनाई कर दिया गया क्योंकि वो 2 से ज्यादा बच्चे थे। राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया क्योंकि उनकी 2001 में ये पॉलिसी आई थी कि 2 से ज्यादा बच्चों को जिनके होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, राजस्थान हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। तो इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की 3 जजों की बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार का जो ये संशोधन था, नियम था कि 2 से ज्यादा बच्चे अगर होंगे तो सरकारी नौकरी उसको नहीं दी जाएगी, वो भेदभावपूर्ण नहीं है, इस नॉन आर्बिट्रेरी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और कहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रूल वाज टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और ये पेटिशन डिसमिस कर दी गई है, यानी उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हवाला दिया है कि पहले भी पंचायत चुनाव को लेकर इसी तरह का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें राजस्थान सरकार की पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई थी कि 2 बच्चों से ज्यादा अगर किसी के होंगे तो राजस्थान में वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसी फैसले को आगे बढ़ाते हुए सरकारी नौकरियों में अगर 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो जो सरकार राजस्थान सरकार का नियम है वो यहाँ भी लागू होगा। और एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का हम इसे कहेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये नॉन आर्बिट्रेरी है। इसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव जो है टू इंश्योर टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग जैसा जो उद्देश्य है ये उन्होंने बताया है। तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। In the national capital, another flashpoint between Delhi LG and the government there, this time over solar policy. While Delhi government has blamed the LG House for blocking the policy, LG House sources said that there was no move to stop solar policy. Rather, the sources said that LG had only sought details on a provision he felt would only benefit power companies. In fact, right after that, Chief Minister Arvind Kejriwal has reverted to the LG, saying he was pained by the language used by the LG in a recent communication. In fact, in a letter written to the LG now, the Chief Minister said that offensive language is unacceptable and that the LG must take action on errand officers in Delhi Jal Board and urban development who are creating a crisis. My colleague Ishika Verma reports. We do see here that, the continuous back and forth between the Lieutenant Governor and the Chief Minister continues on various issues. Like you rightly pointed out, if we talk about the solar, solar policy of the Delhi government, in fact, in the Legislative Assembly itself, the Cabinet Minister Atashi had in fact raised this point and had claimed that Lieutenant Governor had stalled the solar policy of the Delhi government, which could have provided relief to a lot of people, a lot of residents here. Now, in fact, a censor motion on this was also passed against the Lieutenant Governor. Now, on that,
if we talk about the, sources in the left LG house, they say that these comments are misleading. In fact, they also go on to say that no move has been done by the Lieutenant Governor to stall this solar panel policy of the Delhi government. All the Lieutenant Governor has done here is he has asked for more information on this, because he says that, the policy which the government currently is proposing does not contain any provision which will lead to consumers getting zero power bills. On the contrary, there are provisions which will benefit the private power companies. Thus, this is the response that the sources in the LG Secretariat have said. But we'll have to wait and watch, as to how this political back and forth will continue to intensify and how it pans out in the coming days. We're heading to a short break right now, but don't go anywhere. More news and updates on the other side. Welcome back. Now time for an NDTV special investigation. In Madhya Pradesh, a funeral aid scam has come to light, where officials allegedly embezzled government's monetary aid by declaring labourers who were still alive as dead. Take a look at this special report by Anurag Dwari. बता रहा हूँ मर गई भैया, हमको बता। हम नहीं, ये सरकारी कागज बता रहे हैं। ये कागज तो कहता है कि आपकी मौत हो गई, आपने 2 लाख रुपए भी ले लिए, तो आप तो साक्षात खड़े हैं। Urmila carrying on with her life even though on the record she died in June 2023. Not just that, according to the records of the Madhya Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board, the state has also paid her family 2 lakh rupees for her funeral, but NDTV found her alive and well and very, very indignant. बता रहा हूँ मर गई भैया, हमको बता। हम नहीं, ये सरकारी कागज बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि आपके नाम पर इस खाते में 90271 बाकी जो भी है 3167, इसमें 2 लाख रुपए मिल गए हैं आपको 5/6/2023 को। मतलब आज से 7-8 महीने पहले आपको 2 लाख मिल गए, आपकी मौत भी हो गई। नहीं हुए, न हमारी न जिंदगी में तो न 2 लाख मिले, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो मैं तो भैया चौका बर्तन करती थी, झाड़ू पोछा भी छोड़े मैंने 2-1 साल हुई, जब से ये हार्ट आया था ना, जब से छोड़ा मैंने काम, जब से गई नहीं कहीं काम करने, जाने नहीं देते बच्चे। हैरत नहीं होगी तो अपने पैसों की, कि मरने के बाद में हमारे बच्चों को तो मिलते कम से कम। पर आप तो जिंदा हैं। जिंदा ही होंगे, अभी हिड़ रहा उनने पैसे, क्या कर अभी मार डाला भैया। तो ये उनका समग्र पोर्टल पर नाम, और ये जो नगर निगम की सूची है जिसके मुताबिक इनको 2 लाख रुपए मिल गए हैं 5/6/2023 को। अच्छा, मजे की बात ये है कि अपने नाम में नॉमिनी भी यही है, मतलब मृतक भी यही और मृतक की नॉमिनी भी यही, जिनको, और ऐसे 1-2 नहीं, पूरे 11 नाम है 118 की लिस्ट में, जिनमें जैसे वसीम, इनका भी नॉमिनी वसीम, मोहम्मद मतीन, इनके नॉमिनी भी मोहम्मद मतीन, मोहम्मद कमर, अनीता बाई। तो घोटाले के कई स्वरूप होते हैं। So what happened to the money the families of Urmila and many others were paid? According to sources, some government officials have opened bank accounts in the names of these workers and made themselves nominees, thereby pocketing the funeral aid when it is transferred. They have also pocketed the aid meant for registered workers who have suffered a permanent or temporary disability due to a work-related accident. These laborers too are disabled only on paper. There are many other workers like this whose work diary had been inactive for some years, who have been killed off and supposedly paid compensation. They themselves are totally unaware of this. Muhammad Kamar, who lives 3 km away from Chandbar, was also listed as dead, and the money was released on June 21, 2023 to someone called Muhammad Kamar. ये मोहम्मद कमर जी हैं, 48 साल के, 1974 उनकी पैदाइश है, और ये वो सूची है 118 लोगों की जो बता रही है यहाँ पर मोहम्मद कमर जी 2 लाख रुपए इनके नाम से निकले हैं। तो ये कागज तो कहता है कि आपकी मौत हो गई, आपने 2 लाख रुपए भी ले लिए, तो आप तो साक्षात खड़े हैं। नहीं, ये देख के मैं तो करेगी, इसलिए मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ कि मेरा कार्रवाई करी जाए मेरे लिए ये, और इसकी जानकारी हासिल करी जाए, किसने क्या करा है, कागजों में गड़बड़ी, इसकी पूरी जाँच करी जाए। Nor did he get the 51,000 rupees he had applied for his daughter's wedding. अब
अपने यहाँ निकाह तो उनका लड़की का यही हुआ था, अपने अलग ही हुआ था, उसमें अपन ने भरी थी इस काइट के द्वारा। अच्छा। इससे मिलते हैं लड़की को 51,000 उस वो भी नहीं मिला? वो नहीं मिला, उन्होंने पूरी फाइलें में से गड़बड़ी करके ये कर दिया पूरा। तो ये आपके लिए दुखद है या हंसी आ रही है कि आप ही को? दुखद है साहब, किसी हमारे लिए क्या, किसी के लिए भी, कि अपन किसी सरकारी गवर्नमेंट में कोई कागज नहीं दे सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते, किस तरह भरोसा करोगे आप, ये बताओ। And then there are genuine cases of laborers who died but their families never got the money. हाँ, बेटी खत्म हो गई, उसके नाम पे जब भी घोटाला कर दिया। जी नगर निगम वाले जाने, हम नहीं जाने। Since the scheme was launched in 2003-04, the Workers Board has disbursed over 775 crore rupees to 61,200 beneficiaries in MP as funeral and ex gratia assistance. Of this, in just 2023 in Bhopal alone, 2 crores 35 lakh rupees did not go to the beneficiaries. In most cases, e-payment orders were issued after 11 p.m. and copies of death certificates were blurred. None of the identities have been linked with the updated Aadhaar details. Even the Samagra ID, a state government document, was created just before the alleged death. The officials appear to have targeted only those laborers whose wage diaries used to track payments were inactive. The Madhya Pradesh government told NDTV they will investigate the matter. देखिए, जो भी इस प्रकार से गलत काम करेंगे वो सभी को जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो होती है। ये हमारी सरकार है जहां पर इस प्रकार से गड़बड़ी करने वाले लोग तुरंत पकड़ में आते हैं और बात बाहर आ जाती है। Few years ago, NDTV reported how the money from the Workers' Welfare Board was used to give subsidy to the Energy Department, and now such a generosity is being shown with their money that even for Muhammad Idris, the beneficiary or the nominee is Parvati Devi. In Bhopal, with camera person Rizwan Khan, Anurag Dwari for NDTV. News from the south now, and there was embarrassment for the DMK today as a party functionary put out a newspaper ad allegedly showcasing a Chinese flag on a rocket. The fiasco took place while Prime Minister Modi was touring Tamil Nadu and laid the foundation stone for ISRO's second spaceport for small satellite launches in the state's Thoothukudi district. The ad was linked to that. Now, Prime Minister alleged that the state government had insulted ISRO scientists. DMK has called the artwork in the ad a mistake. This personal advertisement by a DMK minister welcoming ISRO's launch pad in Thoothukudi, Prime Minister Modi laid the foundation stone for today, has backfired. Pointing fingers at pictures of Chinese flag and rockets in the advertisement that highlights DMK's role in the project, the Prime Minister took a jibe at the DMK. इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। ये तमिलनाडु डीएमके के नेता भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। The embarrassed DMK called it a goof up by the designer and shot back at the Prime Minister's patriotism spin. யாரோ ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணவங்க அது ஏதோ ஒரு இதை எடுத்து போட்டிருக்காங்க. இதுல வந்து சைனீஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் இங்க வராரு. அவரை வந்து நேரடியாக வந்து பிரதமர் அவர்கள் ரிசீவ் பண்ணி மகாபலிபுரத்துல வந்து ரெண்டு பேரும் வாக்கிங் போறாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழல்ல அதை எதிரி நாடுன்னு யாரும் இது வரைக்கும் அறிவிக்கல. Call it trivial to be part of the Prime Minister's poll narrative or a faux pas by the minister. With daggers drawn both sides ahead of Lok Sabha polls, this is likely to become the norm, pushing aside real issues that affect the common man to the back burner. In Thoothukudi, with Suresh, Sam Daniel, for NDTV. Prime Minister was also in Maharashtra and launched projects in the Yavatmal district. Taking a dig at the opposition there, PM said that the opposition parties had looted farmers in the state for years. एक उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। इसकी जब केंद्र में सरकार थी तब क्या स्थिति थी? उस समय दिल्ली से विदर्भ के किसानों के नाम पर पैकेज घोषित होता था और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। आज देखिए, मैंने एक बटन दबाया
और देखते ही देखते पीएम किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। और यही तो मोदी की गारंटी है। Sports news now, and BCCI has announced a list of central contracts for Indian cricketers. Indian skipper Rohit Sharma, Virat Kohli, Jasprit Bumrah and Ravindra Jadeja have all been put in the grade A+ category. Significantly, Ishan Kishan and Shreyas Iyer were left out of the central contracts list. The duo had reportedly been defying the cricket board's directives to take part in Ranji Trophy matches, and their names missing from the list seems to be a result of BCCI cracking the whip on these cricketers. With that, it's a wrap from my side. Keep watching NDTV.